So today we are doing reading exercise. You will गौतम आप अपसाइड डाउन क्यों देख रहे हैं? ठीक है, चलिए कौन सबसे पहले पढ़ेंगे? स्वाति गुप्ता. चलिए, I'm sharing the screen. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए इसको हम बोल्ड कर देते हैं. चलिए पढ़िए. Good evening, ma'am. Dear Charlie, I hear that you will be in. मैम थोड़ा सा साइज बहुत छोटा है, हमें नहीं दिख रहा है. ठीक है, पढ़ो. पढ़ो. Yes, ma'am. Dear Charlie, I hear that you will be interviewing Nobel Peace Prize winner Mal. प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? मलाला यूसुफजई. मलाला यूसुफजई. Yousafzai in London next month. She is a truly remarkable person. Allow me to suggest that you not only do your work about her, also include the other person and she shared the Nobel Prize with. Also, make notes about the Nobel Prize. Did you know Alfred Nobel was the invest, डायनामाइट. inventor of dynamic in 1867? All the best with the interview. I really enable you, your friend Ahmad. Really envy you. Envy you, your friend Ahmad. Okay, what is this letter about? This letter about related send the message to the dear friend Charlie, and she said that I take a interview of Nobel Prize विनर जो थे उनको लिए थे इंटरव्यू मल्ला यूसुफजई का जो लंदन में नेक्स्ट मंथ. नो 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 नो, आप फिर से पढ़ो इसको. आई हर्ड दैट यू विल बी इंटरव्यूइंग. ध्यान से पहले पढ़ो. अच्छा हाँ, मैंने सुना कि तुमने इंटरव्यू लिया, नोबेल प्राइज इसको मिला है. यस हाँ. मलाला यूसाई इन जो लंदन नेक्स्ट मंथ में जो गए थे नेक्स्ट मंथ लंदन में. She is truly remarkable person. Remarkable means रिमार्केबल मीन्स वंडरफुल पर्सन. रिमार्क करने लायक, वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन. रिमार्क. यस प्रेशियस. ये सच है कि वह बहुत योग. वंडरफुल पर्सन है. और allow me to suggest that you not only do your homework about her, also include the other person and she shared the Nobel Prize with. मतलब ये लाइन के अलावा उन्होंने किसी और को प्राइज मिला था, उसको भी इंक्लूड करना. also make notes about the Nobel Prize. उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए नोट भी किया है.
क्या नोट तुम जान मतलब हाइलाइट्स क्या है उसका, अपने एक नोट कर लेना. Did you know क्या तुम जानते हो अल्फ्रेड नोबल was the inventor of a dynamite. वो बोल रहा है क्या तुम जानते हो अल्फ्रेड नोबल was the inventor डायनामाइट के हैं और जो उन्होंने 1867 में किया था. तो फिर बोलता है कि ऑल द बेस्ट विथ द इंटरव्यू. बोलता है अच्छा करो. अच्छा ठीक है. नाउ आंसर द क्वेश्चन. In this letter, in this letter, Ahmad expression his I can't. Ahmad expression is appreciated for the Charlie a jealous you get. सी होगा मैम. ठीक है. ग्रेटिट्यूड फॉर चार्ली. या He person is very इस happy that he is he is telling his friend that I am really happy that you are interviewing somebody who got the Nobel Prize. यस मैम. So the person is happy. Very good. The answer is gratitude. Gratitude मतलब कि thanks कहना है किसी को. Because in this letter show the most of places gratitude. Yes, yes. Very good. Thank you. Now somebody read the next. Yes, read. Anybody read? All the citizens of the earth need hope. Future generation need hope. 1 minute. 1 minute. 1 minute. पढ़ो. Read. All the citizens of this earth need hope. Future generation need hope. Peace has become hollow because nobody knows how to go about it. The clue lies is knowing yourself, knowing who you are. Piravat. Okay. All the citizens of this earth need hope. Future generations need hope. Peace has become hollow. Hollow means empty. खोखला. पीस है नहीं कहीं. हॉलो का मतलब हिंदी होता है खोखला हूं. Because nobody knows how to go about it. Nobody knows how to become peaceful. The clue lies in knowing yourself. The secret lies in knowing yourself. Knowing who you are. This is by P. Rawat. Answer the question. B ma'am. D. Yes ma'am. B. Peace and hope. नहीं. लास्ट लाइन पढ़ो फिर से. लास्ट लाइन जोर से पढ़ो ना. रीड अगेन. पढ़ो फिर से पढ़ो. Ma'am.
Who was reading this? कौन पढ़ रहा था? Yes, ma'am. कौन पढ़ रहा था? Yes मैम नहीं. Tarun Kumar. जब कहा जा रहा है फिर से पढ़ो तो फिर से पढ़ो. Read. All the citizen of this earth need hope. Future generation need hope. Peace has become hollow because nobody knows how to go it. The the clue lies in knowing yourself, knowing who you are. P. Rawat. Now tell me the answer. B ही होगा. नहीं. लास्ट लाइन पढ़ने के लिए कह रहे हैं ना. ये लाइन पढ़ो, यही आंसर है. The clue lies in knowing yourself. अपने बारे में जानो. The clue lies is अपने बारे में जानना. अपने Peace बारे में. and self. And मैम डी आंसर होगा इसका. आंसर डी होगा. Because in this line show the peace and self-realization. पढ़ते ध्यान से नहीं हो. पढ़ोगे तब तो समझोगे ना. Next, somebody read. Yes, ma'am. Peace cannot be kept by the force. It can only be achieved by the understanding. Albert Einstein. इसका आंसर होगा बी मैम. What is the question? Read. Read the whole thing. मैम peace शांति का नहीं रखा जाता था force. It can only be achieved by the understanding. Read the question. The quotation suggests that. Yes, ma'am. The quotation suggests that peace is a good objective. Yes. Next. Somebody read. An eye of पढ़ो. an eye will only make the whole world blind. Mahatma Gandhi. Which of the following? We did not understand what you read. What you read. An eye for an eye will only make the whole world blind. Mahatma Gandhi. Which of the following is closest in meaning to an eye for an eye? Read. Which of the following Following. Flowing नहीं. following is the closest in meaning to an eye for an eye? मैम इसका आंसर भी होगा द लॉ ऑफ रियलाइजेशन. नहीं. क्या हो सकता है बताओ. वो तो नहीं है.
मैम डी होगा क्या? द लॉ ऑफ ग्रेविटी। No. लॉ ऑफ रिलेटिविटी मैम। Yes. Sorry. Answer is C. The law of retaliation. An eye for an eye. मतलब का मतलब क्या होता है? तुम एक थप्पड़ मारोगे तो तुमको भी हम एक थप्पड़ मारेंगे। तुम गांधी जी ने क्या कहा? An eye for an eye will only make the whole world blind. अगर हर इंसान एक दूसरे को हर्ट करता रहे तो फिर कोई देख ही नहीं पाएगा। आई फॉर एन आई। ठीक है, सी है। ओके मैम। समरी रीड। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है, क्वेश्चन आंसर। रीड। somebody read. बटू पहाड़। इतनी देर करते हैं आप, इतने लोग क्लास में हैं। पढ़िए। Batu Pahat, a place. 4 school leavers have started a bike ride around the country in search of peace. They plan to travel to all the capitals of each state in Peninsula, Malaysia. They intend to video shoot peaceful scenes from every state and come up with a coffee table book presenting the joys of peaceful coexistence in the country. Yes. मैम ए ऑप्शन होगा। Yes, very good. Option is A. Yes. Read. Read. Mahatma Gandhi led fight for Indian independence without firing a single bullet. He used non-violence methods such as civil disobedience, Disobedience. and non-cooperation. He sought What is the meaning of disobedience? जो मतलब obedience जो पालन नहीं करता है, इसका मतलब आज्ञा का जो पालन नहीं करता है, हाँ. non-cooperation. He showed the world that peaceful independence can be achieved without resorting to violence. Answer the question. And expect to be not get Gandhi was. मैम बी होगा। D. यस मैम। D या B? बी D. मैम बी ए पेशेंस लीडर। Patient. Yes.
Read. Young hearts are wide enough to embrace the world with insensitive joy. Embrace. अपनाना. Instinctive joy मतलब तुरंत जो instinct से joy मिल जाता है. Can be Read the question first. Why don't you read the question? young hearts are wide enough to embrace the world with Embrace. insensitive joy. सुनते नहीं आप. Embrace. Embrace Read the question. This is third question क्या है? पढ़ो ना उसको. तुम लोग समझते नहीं हो इंस्ट्रक्शन एक बार. Read the text, read the question, and give me the answer. from the text, we know that children have knowledge of world peace. नहीं. तुम फिर से पढ़ो उसको. Young hearts are wide enough to embrace the world with insensitive joy. ये होगा मैम. Read the complete sentence from the question पूछो और try कर दो आंसर भी. Read the complete sentence, the question and the answer एक साथ पढ़ो. मैम पूरा पढ़ना है. ये क्वेश्चन है ना, अब कौन सा आंसर उसको लगा के पूरा पढ़ो. इतने देर से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या? Young hearts are wide enough to embrace the world with insensitive joy. Embrace. The word is embrace. Embrace the world with insensitive joy. From the text, we know that children have no distinction of race or color, knowledge of world peace, a strong desire to तो एक ही होगा, तो categorize. सारा क्यों पढ़ रही हो? What is the right answer? ये होगा. तो एक सेंटेंस कंप्लीट करो चलो. Young hearts are wide enough to No. embrace The from question. the text, The we know question. that Complete the answer. no distinction of race or color. समझ ही नहीं रही है. अरे इसको ऐसे पढ़ना, we know that the child have, उसके साथ आंसर को जोड़ दो, सेंटेंस पूरा We हो know जाएगा. that child have no distinction of race or color. चाइल्ड कहाँ पढ़ रहा हो? मतलब रीडिंग की आदत बिल्कुल नहीं है. हम तो देख लिए तुम लोगों को. चिल्ड्रेन होगा. और रीडिंग करना है. फिर से पढ़ो. कंप्लीट द सेंटेंस. We know that children have no distinction of race or color. Now you understand. Yes, next. Read. Read. Somebody read. John's exposure to the animals in the zoo where his father's work was
instrumental in his choosing a career of wildlife photography for him. He was ex- what was the pronunciation of he was He was Especially adept, especially attempt at taking skilled. pictures of animals, revealing inner freedom. His photography points to his childhood expression of seeing all children of animal cats in zoos. The word instruction in the note ever means scroll up man. The word instrumental in the notes ever means John used the camera as an instrument. I'm answer D. Yes, answer is D. It served as a mean in pursuing an aim or policies. Am and policy. Reading बहुत जरूरी है, and you must continue reading.